Yes.
Okay, so good morning everyone and welcome to this session. And just wait for a minute and then we'll start. So I will request everyone to open their Jupyter notebook. Let's start from the same point where we have left yesterday, last class. क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? Oops. While statement. While loop. Okay. While हो गया था. क्या चल रहा था? For चल रहा था. For भी I think हो गया था, right? Okay. Okay. घर पे कुछ प्रैक्टिस किया? टाइम कहाँ मिला है ना? सब लोग अपने नौकरी वोकरी में बिजी होंगे। लैपटॉप खराब था क्या? नया लैपटॉप दिया? कितने का लिया? कितने का? 22 में लैपटॉप मिल जाते हैं? क्या? म्यूट नहीं, अपना वॉल्यूम रिड्यूस करो। अब तुम चाहते हो तुम्हारा लैपटॉप इशू को सॉल्व करें हम? अच्छा चलो ठीक है। Can we get started? Is everyone there? So how many people are there in class? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So I can see 17 people have joined. Okay, fair enough. Let's get started. किया? बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे याद दिलाया। अच्छा याद दिलाने से याद आया, मुझे कुछ और भी बोला था ना? क्या बोला था? याद नहीं है? टाइम नंबर बोला था? नहीं, कुछ और भी था, मुझे याद नहीं। क्या स्टैटिस्टिक्स? हाँ मेरे को याद आया। देयर वर 4 पीपल ना हु वर अबाउट टू गिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो वो 4 लोग कौन कौन थे? मैंने 4 नाम लिखे थे ना, याद करो पीछे के। हाँ हाँ, तुम था, एक ये था, और 2 लोग अभी आए नहीं। ठीक है, दे विल कम एंड दे विल गिव प्रेजेंटेशन। 4 लोगों के नाम क्या क्या थे? आई थिंक एक तो यही है ना? हाँ याद आ गया मुझे। चलो, दे विल गिव प्रेजेंटेशन, डेफिनेटली दे विल। And but as of now, let's move towards the Python. Let's write our own user-defined function. Who is iPhone 11? ये कौन है? प्रॉपर नाम से लॉगिन करो। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो गाइस, कैन वी राइट आवर ओन फंक्शन? सबका स्क्रीन दिख रहा है? गाइस जल्दी सेटल इन करो, ओपन योर लैपटॉप्स, है ना? दोज हु हैव केम जस्ट नाउ, डोंट टेक मच टाइम। एंड थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो प्लीज।
Okay, so let's get started. So till now we have used the functions which were there in Python. Okay, which were there in Python. Okay, so for example, let's say if you create a list, then you get a number of functions associated with the list. Yaad aa raha hai? Count, index, pop, right? If you create a tuple, you get some different type of function. If you create set, you get a different type of functions. But if you want, we can create our own functions. Okay? Own functions which can do a number of things, and then probably you can call this function. Okay. So how does any function works? कोई भी function कैसे काम करता है? So for example, let me say print is a function already there, right? But if I run this line, what do you think? It will give me an error. Oh, क्या करेगा? It will not give me any output. I have to give some input over here, right? So for example, if I define a variable, if I say, let me say a equal to 22, and if I give a over here, then it will give me the output. It means, so print is an inbuilt function. Or for example, let me say len. So if you give the list over here, it will give you the length of the list. So len is an inbuilt function, but function will give an output only when you give some input to that function. Kuch to input doge, right? A logical input. So same thing, I can create a function for myself also. So what I can do, I can say def. So def will indicate that I am going to create my own function. Let me say def, and I say I am taking a very simple function, and then we will take many more examples. Let's say def add num, and I say num1 and num2. Obviously colon, and then again you need to take care of the indentation. Okay. So what is def? Def tells that the person is going to create the own function. जैसे तुम लोग टेबल क्रिएट करते थे, तो you need to give that create table name. So add number or add underscore number is the name of your function. तुम यहाँ पे कुछ भी दे दो, that will become the name of your function. Okay, you give anything and that will become the name of your function. But I am taking some name which you guys can connect. Okay, then if I say print value of n1 is n1. Print value of n2 is n2. Then I say result equal to n1 plus n2. Then I say print sum of two numbers is, let me say res. Okay. Sum of two numbers is res. So basically I have added two numbers n1 and n2 and sum of these two numbers. So if I run this thing, will I get an error? Yes. कोई error नहीं आता है. Do you notice something? Or if I say instead of n2, if I give, let me say n5, will I get an error? Answer is no. Or if I say something ABCD plus whatever, will I get an error? क्यों? Yes, सामने सामने है ना. Answer no आ रहा, right? Why answer is no? Because till this point, let me again go back to this thing. Let me say n1 plus n2. Okay.
At line number 42, I have only created the function. But remember, in the just previous example, I said function will give the output only when you execute the function. So at line number 42, सिर्फ function को create किया है. Function will give an output only when you call the function. Now, what is the name of my function? Name of my function is add number. Okay. And then what do? I give, let's say 10, 23. अब देखो output आ रहा है. So value of n1 is 10, value of n2 is 23. Sum of two numbers is 33. Again, I repeat, at line number 42, you have created the function, and function will not do anything till the time you call the function. I repeat my words, function will not do anything till the time you call the function. At line number 43, I am calling the function. Calling the function means I am executing the function. So for example, at line number 38, do you notice when I say print and then I give some input? Okay. So at line number 43, when I am executing the function, do you notice this value 10 is directly mapped to your n1? देखते हो? क्या call करते time मैंने बताया कि that 10 should pass to n1? No. Did I say specifically mention that 23 should be mapped to n2? Answer is no. It is one-on-one mapping. जो left में आ रहा है वो n1 को मैप है, जो right में आ रहा है वो n2 को मैप है. One-on-one mapping इसको कहते हैं. Okay. Now, if I just give 10, now I will get an error. Why? Because it says one missing argument position n2. While defining the function, I have given two arguments. While defining the function, I have told that it will take two inputs. So while calling the function also, you should give two input. So if you give one input, then also error. If you don't give any input, then also error. If you give more than two input, probably then also you will have an error. Now do you notice it says it takes two arguments, but user has given 3. तो जितने तुमने function define करते time बनाए हैं उतने ही call करते time. Okay. Now one more thing. Let me remove this thing and let me say this as n3. Now again, everyone please notice. सिर्फ इतने line पे focus करो. So I am saying result equal to n1 plus n3. When I run this line, do I get an error? मुझे error नहीं आता. Even if n3 is not defined also. Can you notice? In my add num, I have given n1 and n2, but when I say n1 plus n3, it doesn't use my error because it is known as your lazy programming. Error तब आएगा जब तुम इसको run करोगे. Now do you notice it says n3 is not defined. When you call the function, then you will get an error. So don't think that if you do not get error over here, everything is right. Because it cannot check the value of n3. n3 की वैल्यू तो वो तब चेक करेगा जब तुम फंक्शन को कॉल करोगे. ठीक है. So these type of things are known as your lazy programming. Again you will get an error. And error इसलिए आ रहा है because you haven't defined n3. So अगर मैं यहाँ पे n2 की जगह n3 भी कर दूं, then also this error will go. यहाँ पे भी n3 करना पड़ेगा. Then also this error will go. Okay. इतना सबको समझ में आ रहा है? अब प्लीज ट्राई करो and write a line. Function is only created. Over here, write calling the function. Write the function, run it with multiple times, with error, without error, and see.
You were actually, वैसे तो तुम 10 मिनट लेट हो, but in a way you were very late. एक काफी बड़ा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया. Any variable. Yes. What is add underscore number?
What is add underscore number? It is not. Add underscore number is a command. No, it is a name of a function. It is just like any variable name. जैसे यहाँ पे 1/22 दिया है ना, वैसे यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो. हाँ, यहाँ पे दो कुछ भी नाम दो, अपना नाम दो देते हो. हटा दो. रन करो लाइन. हाँ, जो नाम वहाँ पे दिया ये वही सेम नाम यहाँ पे दो. बनवाया. It's a variable. It's a variable. Yes, it's a variable. सबका आउटपुट आ रहा है. Okay, so see basically, let me do one thing. Let me take this program and let me say numbers manipulation. Numbers number and let me say calculation. ठीक है, number calculation. So sum of the this, let me say print product of two numbers. Product of two numbers is, then let me say n1 into n3. सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और कुछ निकाल सकते हैं? Okay. Now, if I take the same thing, number calculation, and if I give 10 comma, let me say 45. So do you notice it can give the product also? Okay. So whatever thing you want to do, if you want to divide two numbers, multiply, जितने भी सारे calculations तुम्हें करने हैं, सब कुछ इसी के अंदर में कर सकते हो. ठीक है. Now, अब सब लोग अपने कोडिंग को स्टॉप करो and have a look over here as of now. So what is the value of RES? RES की वैल्यू क्या है? In this example, what is the value of RES? अभी जो मैंने लाइन नंबर 55 एग्जीक्यूट करी उसमें RES की वैल्यू क्या है? 10 plus 45 क्या ना है? 55 है. RES की वैल्यू सब लोग एग्री करते हैं? Now it says name RES is not defined. ऐसा क्यों होता है? पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइंड है. करेक्ट आंसर. थोड़ा और इसको सही करोगे इन अ बेटर वर्ड. वैसे तुम्हारा आंसर सही है, इन राइट डायरेक्शन. Again, let me repeat. So when I run the line number 55, फिर से देखो guys, let me change the variable. Let me say 5, 12. So 5, 12. So value of RES is 17. ठीक है ना? But जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो it says RES is not defined. ऐसा क्यों? Variable है. Yes, RES is a variable. RES is a variable, but ऐसा क्यों हो रहा है? फंक्शन के अंदर है. See, basically, now I want to introduce the concept of two things. पहले मैं लिख देता हूँ concept of global and local variable. Concept of global and local variable. Will everyone agree that RES is a variable? Without any doubt, it is a variable. Now, but this RES is a local variable. Local variable as in the scope is limited only inside the function. जो local leader होता है ना, सपोज करो सिर्फ पुणे तक
है, टू पैन इंडिया रीच नहीं है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए. It is a local variable. Scope is limited only inside the function. At line number 58, do you notice I am calling it outside the variable? Sorry, outside the function. Outside the function जब मैं इसे call कर रहा हूँ, it says result is not defined. But many a times you want to use the variable outside the function also. The output from the function, if you want to use this output for any other input. So what I can do is I can just say global res. आप देखो वैल्यू आ गई. So global res. So now res becomes your global variable. So a variable which is global can be accessed outside the function also. इन दो lines को please note down करो and याद रखो, they are very important. ठीक है. So global variable can be used outside the function also. ठीक है. And how do you make global? Answer is very simple. Just write the word global. Just write the word global. So global will make your variable global. It can be accessed within the function and outside the function also. Done, guys? The last two rows. सबका आ रहा है आउटपुट? समझ में आया? Those who are in online, join remotely. What about them? तुम दोनों का समझ में आया? Okay. Now everyone again stop your coding and see what I'm going to tell. सब ध्यान से देखो यहाँ पे. Let's do one thing. I'll create a list. It has nothing to do with this user-defined function, but just for explanation purpose, let me say. So how do I create a list? Using my square bracket, pass some numbers. Whatever numbers you want to pass. Okay. Now if I say L1 dot count, and I have already told you how to see the documentation. बताया ना, shift tab.
So I can see the documentation. Now this documentation you are able to see. Why? Because it was created by the people. जब Python बनाई गई तो documentation डाला गया. Okay. What is this num? So basically count is a function and you can see the documentation, or rather you see any other function also. So for example, let me say insert, उसका भी documentation तुम्हें दिखेगा, right? Can you notice this word docstring? Docstring is basically your documentation string. People are giving the documentation so that if anyone is using the function, he can get an idea ये function करता क्या है, what this function does. Okay. Now you have created this function. Okay. You have created this function to add and multiply. It's a small function, so you know what this function does. But later on, when we will create a bigger functions, they will do multiple things. They will do multiple things. तुम्हें कैसे याद रहेगा ये function क्या करेगा? Or even let's say when you have created the function, you may still know what this function will do. But if someone else is using a function, how will he come to know that what was the purpose of this function? ये function किस लिए बनाया गया? So what we can do is we can also add a documentation over here. Okay. So do you notice in my function it says no docstring. सब लोग please run करो. देखो क्या ऐसा ही आता है? No docstring देता है? Does it give no docstring? Just do your shift tab. दोनों आजू बाजू वालों को चेक करते रहो. दिखता है? So as of now, does it gives you no docstring? Remember? Why? Because I haven't given any docstring. मैंने कोई comment दिया ही नहीं है, तो आएगा कैसे? So if I want to give a documentation string, again I'll tell you, when I do shift tab, I see docstring as no documentation string. So what I can do is, everyone please have a look. So मैं क्या करूँगा? I'll do something like this. Triple quotes. Whatever you give inside the triple quotes will become your documentation string. You can take it as the comments. उसमें कोई spelling check नहीं, कोई syntax नहीं, कोई error नहीं. No validations, no errors. Okay, so let me say this program is used for addition and multiplication of two numbers. Okay. User needs to give numeric data. User needs to give two inputs. Okay. Now, do you notice the documentation is appears over here? आने लग गया? So going forward, when you are working in the real life actual industry, always make sure that you give some documentation so that तुम्हें भी याद रहे program किससे था, and if someone else is using, he can also get to know. ठीक है? Please go ahead and add the documentation string. I'll repeat how to add the documentation string. Addition of documentation string is very simple within your triple quotes. And do you notice within your triple quotes, वो सारी चीजें red में आ रही हैं? It will not do any syntax check, any verification. कुछ भी देना है. कुछ मेरे खिलाफ बोलना है तो वो भी यहाँ लिख दो. ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? वो मुस्कुरा भी रहा. ठीक है? Please try. अपने मन की जितनी भड़ास है सब यहाँ निकाल. किसी के बारे में कुछ भी लिखो. No. It will take another documentation.
तो समझ में आया? क्या बात, तुम कोड देख के मुस्कुरा रहा हो या कुछ और देख रहे हो? कोड देख के हंसी जो दो देखे देखो, अगर चल रहा है तो ठीक है, अगर चल रहा है तो ठीक है। So keep one thing in mind, in Python one thing can be done in multiple ways, है ना? अगर तुम्हें लग रहा है सिंगल कोड में चल रहा है कोड करके यस नहीं मैं जानबूझ के थोड़ा देर तक रुक गया था, ये पता है हो ही जाएगा। Okay, any questions, any doubt till this point, guys? User defined function. याद रखना इसका आगे यूज होने वाला है जब NLP करेंगे, and not even NLP. In many times I would be writing the functions, and at that time functions would be doing multiple things. They will clean the document, they will create the TDM and many other things. Clear? अब एक काम करो मेरे लिए, क्या काम करोगे? Create a user defined function which will take input from user and tell if number is odd or even. Odd and even के checks तुम लोग को already पता है, right? Now just put all those things within the user defined function. कितना time? I'll give you 3 minutes. ठीक है? We have already done even and odd. You just have to put it in this thing. So basically what I'm saying is you should run a function, give an input, and it should tell whether it's a prime, whether it's an even number or a odd number. Jaldi, 3 minutes.
क्वेश्चन यही है, create a user defined function which will take input from user and tell if it's a number is even or a odd number. You already remember we have done this thing using our input function. इस बार user defined function डाल देना बस. Those who have joined online, guys, please start putting your code on the chat window. 1 more minute. And उसके बाद थोड़ी देर में एक चॉकलेट वाला क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन चॉकलेट देना थोड़ा हार्मफुल हो रहा है. जब से उन दो को चॉकलेट दी तब से उन दोनों ने आंसर बंद कर दिया. मुझे लगा और आंसर्स आएंगे, बट एनीवे लेट मी एक्सपेरिमेंट इट मोर. जबकि मैं बड़ी चॉकलेट लाया था. किस किस का हो गया? अरे यार इतना इंडेंटेशन ध्यान रखना है. इनपुट नहीं चाहिए, यूजर डिफाइंड चाहिए मेरे को. अब जो चीज पता चले मतलब सीधे सीधे रॉन्ग बोलूंगा. ये वाले सेंटेंस को देखो, डेफ नंबर यहाँ पे डेफ नंबर इक्वल, आप ऐसा क्यों दे रहे हो? फंक्शन का डायरेक्टली लेना इनपुट ना, तो उसके लिए अलग से इनपुट फंक्शन की क्या जरूरत है? रिमूव दोस इनपुट फंक्शन. ये भी गलत है, ये भी कर लो. इंडेंटेशन रॉन्ग है सबका. हाँ, इतने सारे कैसे जनरेट कर रहा है? नेक्स्ट नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट देखो क्या है. यूजर से इनपुट लेगा और बताएगा कि वो इवन है या ऑड है. व्हाट अबाउट यू शोइंग? तो करिए. व्हाट डू यू मीन बाय नहीं किया? तो ले आओ. Do you notice one thing? When you are calling a function, you can give input to the function. Then why do you need a input function separately? जो मैंने पिछली क्लास में बताया था उसकी तो जरूरत नहीं है. जब हमने दो नंबर्स को ऐड किया तो जब मैंने इनपुट फंक्शन यूज किया क्या नहीं ना. यह एल्स आने के लिए पहले ये मान जरूरी है.
with this name, give a variable name. वो बोर्ड में जो आपने डाला है, देखो मैंने कैसे फंक्शन क्रिएट किया था। यहाँ पे आप कोई वो मैसेज भी पास कर सकते हैं। मैसेज पास करना तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए होगा। कोई फंक्शन बिना इनपुट कैसे चलेगा? सिर्फ एक इनपुट तो देगा ना। इक्वल टू के ऊपर तो कैसे ब्रैकेट में दीजिए। वन नहीं, कोई वेरिएबल को अब रन करिए। आई तो हो गया, आर्गुमेंट हो गया, आई में वैल्यू स्टोर हो गई। आपने यहाँ पे आई दिया है, यहाँ पे नाम दिया है, तो यहाँ पे भी आई होगा। यहाँ पे एक काम करो, वहाँ पे नाम दो, आई दिया नाम दो। ऊपर कर दो मतलब लोगों को अब तक समझ में नहीं आया। ठीक है, सब लोग प्लीज स्टॉप करो एंड हैव अ लुक ओवर हियर। सो आई सॉ मेनी पीपल वर्किंग। किसी को ऐसा लगता है जिसने सही कर लिया है? नहीं ना? इसका मतलब चीजें समझ में तो आई, लेकिन अभी 100% समझ में नहीं आई। ओके, सब लोग एवरीवन प्लीज स्टॉप एंड फोकस ओवर हियर। सो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? My requirement is create a user defined function which will take input from the user and will tell if the number is even or odd. ठीक है, तो वो फंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए। Let me say give us some name. Define, let me say even and odd. Okay, now what people were doing, some people are doing something like this. They are saying input, enter the number. But why do you want this thing? When you are running a function, remember when I ran the line number 65, I was able to pass the input to the function. So why do you want a separate input function? You cannot pass anything. So some people are saying something like this. Please, यहाँ पे देखो एक मिनट. Stop everything what you're doing. Some people are doing something like this. Input, enter the number. ठीक है? This is wrong. So define input and just say number. And then if you want, you can say print the value of number is whatever number. Then what is the check for even and odd? Even and odd का check क्या है? If num percentage 2 is equal to 0, then I can say print number is a even number, and followed by you can again print a number. When I have already checked for even, then I can directly say else print number is an odd number, and I can directly say comma number. Invalid syntax number कहाँ पे हो गया? Okay, यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं है. ठीक है? Now you just need to call this function. Even odd, let me give 9. It says it's an odd number. If you give 8, it gives the even number. ठीक है? This is the right code. Now what people are doing? अब लोग कर क्या रहे हैं? लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं. लोग ऐसा बोल रहे हैं. Def, किसी ने फंक्शन का नाम दिया, let's say even odd. ठीक है? Some people are starting their coding from this point. कुछ लोगों ने यहाँ से करा है. ठीक है? Num. ठीक है? And then what they are doing, if num.
So you need to follow the indentation. ठीक है ना? You need to follow the indentation and you don't need to give the separate input command. While calling the function, you are already passing the input to the function. Na? Other mistake what people are doing is, for example, she gave I over here. Will this give me an error? क्या ये error देगा? Answer is yes. जब तुम इसको let me, अभी तो वो function क्या, चलो define हो गया, even and odd. क्यों error नहीं दे रहा? Even and odd. यहाँ पे if you give, let me do one thing. Let me interrupt the call. Or let me restart my call. देखो error आता है. It says num is not defined. Why num is not defined? Because over here you have given I. So everywhere you need to use I. Or if you are giving num, then you use your num. अब समझ में आ रहा है सबको? अब प्लीज करो on your own. Done. हाँ ले सकते हो अगर लेना है आपको तो, कोई से भी ले लो, या उसको बोल दो ना वो भरत को. ठीक है. नेक्स्ट टाइम लगता है घर से चेयर लानी पड़ेगी. उत्कर्षा को बोल दो, क्लास अरेंज करती है तो ये सब इसको अरेंज करना चाहिए. हेलो हेलो हेलो. थैंक यू. हेलो. हाँ बोलो. मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल बैक करूँ. 2 मिनट. डन. सबको क्लियर है? अच्छा, रिमेंबर we have written a logic for finding the factorial. We have written the logic for finding the factorial. Now do one thing. I'll just copy this statement and I'll write it over here. Create a user defined function which will take input from the user and
फाइंड द फैक्टोरियल। सो बेसिकली कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपना वाला फंक्शन, अपना लॉजिक जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन में डाल देना है विद प्रॉपर इंडेंटेशन। ओके, हाउ मच टाइम? टेक 5 minutes। 5 minutes बहुत हो गया, because you already have the logic for factorial. Just put it inside a function.
समझ में आ रहा है? What about you? बाजू वाले का देखते कर लिया? मैंने एक चीज देखी है, क्या ये आपको क्या है? मैंने ये देखी जब मैं क्लास में पढ़ा जाता हूँ सबका आउटपुट फटाफट आ जाता है, कुछ अलग होता है मेरे क्लास के बाद किसी एक ने किया सबने को पास कर दिया। ओके इसको थोड़ा सा मुश्किल कर दें। ओके create a user defined function, create a user defined function which will take the input from user and find the factorial for all the numbers, for find the factorial for all the numbers. ठीक है, one second before you start coding पहले problem statement को समझ लो. Suppose can someone put the function code on the chat window please, जल्दी सर.
Okay. So Shreyas has shared the code. Thank you. So for example, this is a function. And when I call this function, so if I say fact, and when I say, let's say 5, so it returns me 120. Okay, which is fair enough, right? Now what I want is create the user defined function which will take the input and find the factorial of all the numbers. So abhi 5 aa raha hai. Now what I want is it should print factorial of 1 as 1, factorial of 2 as 2, factorial of 3 as 6, factorial of 2 as 2, factorial of 1 as 1, factorial of 3 as 6, factorial of 4 as 24, and then factorial of 5 as 120. अगर किसी ने 5 दिया है तो it should print factorial of 1 till 5. अगर किसी ने 10 दिया है then it should print factorial of 1 also, 2 also, 3 also, 4 also and up to 10. सबको प्रॉब्लम समझ में आया? रिक्वायरमेंट प्लीज मेक द चेंजेस. एक फॉर लूप डालना पड़ेगा. So if someone gives the input 5, this should be the output. It should print the factorial of 1 also, 2 also, 3 also, 4 also and 5 also. In person भेजा मुझे चैट पे. For factorial उसको थोड़ा सा और आगे के लिए चेक करो, 6 के लिए चेक करो, 2 के लिए चेक करो, 1 के लिए चेक करो, 10 के लिए चेक करो, तो क्या आता है? देखो रन हो रहा है. तो एक मिनट वापस देखो. ये जो तुमने चैट पर डाला भाई. ठीक है, चलो. तुम्हारा आउटपुट आ तो सही रहा है लेकिन उतना भी सही नहीं आ रहा. फैक्टोरियल ऑफ 6 इक्वल टू 1 आ रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 6 इक्वल टू 2 आ रहा है. ठीक है, इसमें एक स्लाइड चेंज करो, जहां पे नंबर लिखा है वहां पे फैक्टोरियल लिखो. हो गया.
पता है क्या, तुम सब लोग चीटिंग कर रहे हो, ट्रस्ट मी, बिकॉज सबका कोड एग्जैक्टली एक कैसे हो सकता है, किसी एक दो ने किया है और आपस में शेयर हुआ है, ठीक है। आई कैन से विद 99% कॉन्फिडेंस, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब स्टेज से गुजरा नहीं हूँ, ठीक है। अगर चीटिंग कर रहे हो तो गलत है, ठीक है। सबका कोड विद डॉट एंड कॉमा सेम कैसे हो सकता है, कुछ तो नाम चेंज होता है। सबने नम लिया है, सबने ही फैक्टोरियल लिया है, सबने ही एग्जैक्टली सेम कैसे लिख लिया, ठीक है। सो तुम लोगों ने चीटिंग करी है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। डोंट डू दैट, ठीक है, डोंट डू दैट। अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत है, ठीक है। तो फैक्टोरियल आपने बोला था आई चाहिए, आई ठीक है, ये तो बराबर है। हाँ वो पता है, ठीक है गाइस, चलो देखो, लेट्स सी। सो डिफाइन, so this is the code which 99% people have done, and this is the code from Kalpesh whoever. So define factorial, name of the function is this. So इसने initial value दे ली factorial equal to 1 for I in range 1 comma number plus 1 factorial equal to factorial into I, ठीक है। Then print factorial of factorial is factorial, okay। तो फैक्टोरियल की जगह आई डाल, तो वो बराबर 6 का यहाँ पे भी डाला, सॉरी हाँ, यहाँ पे आई factorial of I, ठीक है ना, factorial of I 1 2 3 4 5 and 6, देखो। So basically what is happening, so when you give the value, let's say तुमने number की value 5 दे दी, okay, then for I in range of number 1 plus number plus 5, so this I will start from 1 and it will go till your 5. If the value of number is 5, then what will happen, factorial equal to factorial into I. So what is the value of I? At the starting value of I is 1 and starting value of factorial is also 1, so 1 into 1 will become 1 and it will store in your factorial, ठीक है। बेसिकली ये जो तुमने नाम दिया है ना, दिस नेम शुड हैव बीन चेंज। यहाँ पे तुम्हें, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग ना, जिस ये जो लॉजिक है ना, दिस इज नॉट अ प्रॉपर लॉजिक। प्रॉपर लॉजिक एज इन द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड नेम ऑफ द फंक्शन आर सेम एंड डू यू नोटिस इट इज, इसलिए उसको रेड में दे रहा है। कायदे से इसका नाम चेंज होना चाहिए था, फैक्ट कर देना चाहिए था। जहां जहां पे फैक्टोरियल था वहां वहां पे फैक्ट कर देना चाहिए था, सो दैट नेम ऑफ वेरिएबल एंड नेम ऑफ दिस थिंग इज नॉट सेम, ये होना चाहिए था, ठीक है। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, सो दैट वेरिएबल नेम एंड फंक्शन नेम आर नॉट सेम, ठीक है। अदरवाइज वो बहुत कंफ्यूज करेगा तुम्हें, कौन सा फंक्शन का नाम है, कौन सा वेरिएबल का नाम है, ठीक है। नाउ let me say if user has given as 5 the value, it has given the 5, then this loop will run from 1 to 5, am I right? The starting value of I would be 1, the starting value of fact is also 1, so 1 into 1 will become 1 and then you are printing this value, then value of I will become 2,
So, and what is the value of fact? Value of fact is 1. So 2 into 1 will become 2. And on the right hand side, you are storing the value. So 2 into this value will get printed. Now value of I will become 3. But what is the value of FACT? Value of FACT is 2. So 2 into 3 will become 6. And it will continue. Yes. कोड पे चैट पे पेस्ट करो क्या लिखने जा रहे हो. हाँ रखा. इतना टाइम क्यों लग रहा है लेकिन चैट पे पेस्ट करने में. ओके लेट्स मूव अहेड. ठीक है जब तुम रखोगे तब देखेंगे. Practice one more write one more program to check if the string is the palindrome. Chalo, I'll give you 2 minutes. You already have the logic? Yes. Check if the string is palindrome. Done. Put your code on the chat in private to me. So Shreyas kaun hai? Okay, code seems to be good. Short and sweet.
डन? किस किस का हो गया? लेट्स गो हिंट. ओके. So let's see. So DEF, and you can say palindrome and give something. Let me say str1, and if you want, you can just reverse it. str2 equal to str1, and you can give colon colon -1, right? Or you can directly do in a single step. If str1 equal to str2, and I want to compare them, right? So I should give this thing. If str1 equal to str2, print the string is palindrome. And what I can do is I can say else print the string is not palindrome. Okay, and then followed by, if you want, you can print the string also. Print करा लो. किसी ने dot format use किया print का? If you want, you can use the dot format also. So function created, let's run it. So let's give mom over here. It's a palindrome. Let me give another thing. It's not a palindrome. ठीक है ना? You give dad. Okay. कितना मुश्किल था? One line का कोड था. I think this logic probably you already knew. ये सारा logic तो तुम्हें already पता ही था. Only thing is this time you had to take the input from the user. अच्छा, पहले मैंने चॉकलेट क्वेश्चन दिया था, इस बार मैं ब्रेकफास्ट क्वेश्चन देता हूँ. You solve this and you go for break. ठीक है? Solve it and go for break. अगर किसी ने गूगल की हेल्प ली तो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा, बिकॉज तुम अपना लॉजिक बता नहीं पाओगे. ठीक है? So you are those who जिनके मन में आया गूगल से लेके कर लेंगे और ब्रेक पे चले जाएंगे, वरना उनके लिए है. Now create a user defined function which will take a integer, and obviously, and I am saying positive integer, and find if the number is prime or not. ठीक है? If a number is prime or not. ठीक है? I had already given this exercise. घर पे practice करके लाना. So if you have already written the logic for prime, just put it inside the user defined function. But before you guys move, so what is the definition of prime number? Can I have the proper definition of prime number? Divided by itself and 1. So prime number will start from 2. 1 prime number की category में नहीं आता. It is neither prime nor composite. ठीक है? So any number 2 or onward. So 2 would be a prime number, 3 would be a prime number, 5 would be a prime number, 7, 11, all these numbers would be prime, which are divided by 2 or itself. ठीक है? करो प्लीज. जिसका आता जाएगा वो ब्रेक पे जाता जाएगा. It will test your logic also, user defined function also. इसमें लूप भी आएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी आएगा और इफ भी आएगा. तीनों चीजें आएंगी. अब करो.
सो ये क्वेश्चन मैंने कितने बजे दिया है, इसमें टाइम भी लिख देता हूँ, अदरवाइज तुम लोग बोलोगे कि सर टाइम तो दिया नहीं। 10:20 AM पे दिया है, देखते हैं कितनी देर में आता है। अच्छा, हाउ मच टाइम डू यू नीड, कितना टाइम चाहिए तुम लोग को? तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए? 10 मिनट। तुम बताओ 10 मिनट। उसके पीछे वाला प्लीज यू टेल मी। 10 मिनट्स यू टेल मी। तुम बताओ 10। तुम बताओ 12 मिनट्स। तुम बताओ है 12 मिनट। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग 10, कुछ लोगों ने 12। सो अगर हम मीन भी निकाल लें तो 11 मिनट्स आ जाता है। ठीक है, अगर हम मीन भी निकाल लें, सैम्पलिंग कर ली मैंने, ठीक है, सो 11 मिनट्स। सो इट इज 10:20, 11 मिनट्स पकड़ के भी चला तो 10:31 इज द एंड टाइम। किसने बोला हो गया? लेट मी हैव अ लुक। अच्छा, everyone just stop 1 minute. I want to tell you one more thing. अब शायद टाइम आ गया वो चीज बताने का, and probably you will need that while doing your writing this prime number program. Let me do one thing. Let me say while, let me say I equal to, or I equal to 1. ठीक है, while I is less than 20, print I. Okay, then if I run this thing, it will definitely go into the infinite loop because I की value हमेशा 1 रहेगी. It will never be greater than 20. So what I'll do is I'll say I equal to I plus 1. So it prints the numbers. ठीक है ना? Now suppose I want to break. I want to break. My requirement is I don't want to print if value becomes more than 13, let's say. Okay, then what I can do, I can say if, as of now उसने कितने वैल्यू प्रिंट करते till 19, right? If I say if I greater than 13, then what I'll do, I'll say break. I'll say break. Do you notice it prints only till 13? ब्रेक का मतलब क्या है? इसके आगे एक लाइन लिख दूंगा, break as soon as break is encountered, break will close all the loops. It will close all the loops and come out of it, come out of the execution. ठीक है, एक लूप चल रहा है, तुम्हें उसे अगर ब्रेक करना है, यू कैन पुट अ कंडीशन. जैसे ही ब्रेक इनकाउंटर होगा, ऑल द लूप्स वुड बी क्लोज एंड इट विल कम आउट ऑफ द execution. Is the break part clear? Probably you may need it in your writing your prime. ठीक है ना? You may need it while using your prime. ठीक है, ये break भी आगे heavily use होगा. Mark it as important. If you want, I can put this on the chat window so that people can quickly use it. ठीक है, take it from the chat window.
हम्म फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब थ्री के लिए क्या बोला था, थ्री का प्राइम नंबर, ठीक है, fair enough, makes sense। जाओ तुम भी जाओ, देखो डन हो गया।
पहले चेक करो, 2 के लिए चेक करो, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, तो मुझे बुलाओ। It's time up. चेक किया, किस किस नंबर के लिए चेक किया? ठीक है, okay, chalo, in interest of saving the time, let's take it up. So let me say DEF and I'll say prime number. Okay, then pass some number. Please अब 2 मिनट बात नहीं करो, your time is up. स्क्रीन नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, दिख रहा है? ओके, ठीक है। सो DEF प्राइम नंबर, गाइस 2 मिनट पीछे, अब टाइम अप हो गया, ठीक है। सो पहला चेक क्या कर सकते हैं? आई कैन से इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना? इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, देन व्हाट आई डू, आई फॉर आई इन रेंज, कौन सी रेंज कर लें? आई इन रेंज फ्रॉम 2 टिल नंबर तक भी जा सकते हैं, और समवन वांट्स देन नंबर बाय 2 तक भी कर सकते हैं, राइट? ठीक है, सो लेट्स से इफ यू आर चेकिंग इफ 12 is divisible by 12 is a prime number or not, then you only need to check till 6, उसके आगे चेक जरूरत नहीं, और you can check till 11 also, ठीक है ना? So whatever your choice, ठीक है। Now I can say if number percentage I, right? percentage I, हमने 1 डाला है, यहाँ पे I होना चाहिए, percentage I equal to 0. So if number is divisible by anything, remainder would be 0. अगर ये चीज 0 आ गई, it means it is not a prime number ना, it is not a prime number. अगर remainder 0 आ गया, it means it is not a prime number. So what I can do is I can say print number followed by, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, this number is not a prime number, this number is not a prime number, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट number and then I can say comma, number is divisible by, and then I can say it is divisible by I, right? Now so this will check whether the number is, अगर prime हो गया, ठीक है, then what I need to do is break. अच्छा, now why break over there? यहाँ पे break क्यों? So for example, let's say you have entered the number as 12, and if number is already divisible by 2, then you don't need to check for 3, 4 and 6. जैसे ही किसी भी नंबर से divisible होता है, just break and come out. Remember, you don't need to go till, so let's say you have given the number as 15. So and you divide 15 by 2, remainder is not 0, so again you divide it by 3. But जैसे ही 3 से divide किया, remainder becomes 0. So there is no point checking for 4, no point checking for 5, and so on and so forth. You can directly give a break statement. So break. So as soon as you identify the number is divisible by something, just break it and come out of the loop. Okay. So I'll do a break. Otherwise, what I'll do, I'll write a else. Now this else is mapped to your for. Okay. I'll say else print number, and I'll say number is a prime number. Okay. Number is a prime number. Then what I can do is
I can write one more else. So for this thing, ठीक है ना, I can say else print enter the number greater than 1. क्या प्रॉब्लम दे रहा है? क्या गलत दिया है? प्रिंट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर. ये वाली चीज गलत है. Okay. Okay, let's check 2. So 2 is the prime number, or let me say if I give 0. So do you notice it says enter the number greater than 1. So this is an extra check. अगर तुम्हें extra check डालना है, right? Now let me give 7. 7 is a prime number. Will people agree? अगर हम दे देते हैं, let me say कोई ऐसा बड़ा नंबर सोचो, which I think let's say कोई बड़ा सा नंबर which is not a prime. और इवन नंबर ना हो, बिकॉज इवन नंबर तो तुरंत पता चल सकता है. 999 तो पता है 3 से डिविजिबल है. बड़ा है लेकिन पता है कि 3 से डिविजिबल है. 1079. Okay. Okay, so 1079. So this number is not a prime number and this number is divisible by 13. प्राइम नंबर क्यों नहीं, उसका भी एक वो रीजन दे देता है, राइट? ठीक है. So 1079 and this number is divisible by 13. ठीक है ना? आप सब लोग प्लीज इसको नोट डाउन करो इस प्रोग्राम को. You want me to explain it or is it clear? तुम्हारे सामने लिखा है तो क्लियर होना चाहिए, राइट? टेल मी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है. ब्रेक तुम ले लो. ब्रेक क्या तुम चारों को प्रेजेंट करना है? ठीक है, आप ब्रेक लेके आओ, एनर्जी लेके आओ, फिर देखते हैं कितनी एनर्जी मिली है. उसको ब्रेक नहीं मिला था या ये वाले में ब्रेक नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वाला ब्रेक हम दे रहा. चारों लोग है ना? हाँ ठीक है. मैंने ऑलरेडी टॉपिक सोच रखे हैं. तब तक करेगा ना. ब्रेक हटा के ब्रेक ब्रेक वाली लाइन को कमेंट कर दो, देखो क्या होता है. देखो ना, तो वो ऐसा ऐसा आउटपुट देगा. नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, नंबर स्प्लिट 3, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज डिविजिबल बाय 83. ठीक है, सपोज करो मैंने ये दे दिया. लेट मी से आई हैव गिवन 5, नंबर इज अ प्राइम नंबर. लेट मी से आई गिव 11. तो वहां पे तो ठीक जाएगा. बट जैसे ही तुम कुछ और नंबर दोगे तो हो क्या रहा है, वो 12 2 से भी डिवाइड करेगा, फिर 3 से भी करेगा, फिर 4 से करेगा, 6 से भी करेगा. अननेसेसरी कैलकुलेशन है ना, अननेसेसरी कैलकुलेशन. जैसे ही पता चल गया इट इज डिविजिबल बाय वन ऑफ देम, स्टॉप. है ना, हमें क्यों करना पूरे तक डिवाइड करना, है ना. सो ब्रेक से नहीं करोगे तभी भी वो आंसर तो दे देगा, बट तुम्हें मजा नहीं आएगा लाइफ में. ठीक है, अब देखो. Now guys, take your break and let's meet at 11 a.m. Break till 11 a.m. ठीक है, 20 मिनट का ब्रेक है. यूज इट वाइजली. फटाफट जाओ, फटाफट आओ.
हम्म Seven. Number 7 is the prime. 7 क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने इसको लूप में डाल दिया है, ठीक है, बार बार रन हो रहा है। इसी से भाई अभी ये एल्स को खत्म करो, एल्स को बहुत नीचे लाओ, एल्स बहुत की एफ नीचे लाओ, ये बता। हाँ नहीं ऊपर वाला नहीं एल्स जो है ना ब्रेक के बाद जो एल्स है उस एल्स का पहला ई बहुत की एफ नीचे लाओ। पूरा कोड ये वाला है हमने क्या बोला एंटर द नंबर ग्रेटर देन 1 हो सकता है कितने नंबर लेस देन 1 डाला है तो उसकी एरर मैसेज करेगा होगा, ठीक है। else ठीक है। जीरो क्या बात से ऐसा है बड़ा है ये वाला इससे
तुम दोनों को समझ में आ रहा है? तुम्हें तो आ रहा है, तुम बताओ। घर में प्रैक्टिस करते हो? कभी जाके पढ़ाई करते हो? करना है। अगर एक बार स्टार्टिंग में कर लोगे ना, शुरू के 1 मंथ, उसके बाद आगे नहीं भी पढ़ोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर तुम्हें लग रहा है स्टार्टिंग का 1 मंथ थोड़ा सा हल्का है, बाद में कैचअप करोगे तो ना। आई अगेन रिपीट, ये डेटा साइंस है, यहाँ पे हर चीज कनेक्टेड है। आज का जो सेशन मिस हुआ या नहीं समझा तो आगे प्रॉब्लम देगा। मेक श्योर यू आर पुटिंग एटलीस्ट 3 to 4 hours
Okay, shall we move ahead? Public कब तक आएगी? Drop a message, they will come. बाकी लोग कहाँ हैं? इतनी देर 20 minutes are not enough. हाँ but 20 का 25 हो गया ना, already it's 11:05. कल का ऑफिशियल टाइमिंग क्या है? होगा या है? देख के बताओ। नहीं, कल मैंने 1 घंटे क्लास एक्सटेंड करने को बोला था उत्कर्षा को, उसने चेंज किया है नहीं किया? जस्ट टेल मी। वो लीव इसलिए क्योंकि मैं लीव पर हूँ। एंड लीव पे मैं इसलिए हूँ बिकॉज मैंने पिछले 4 महीने से एक भी दिन छुट्टी नहीं की है। छुट्टी मतलब सैटरडे संडे भी नहीं। तो कुछ इश्यूज आ गए हैं, उनको थोड़ा रिजॉल्व करना है। Okay, चलो, we will start now. We waited enough.
Guys, can you see my screen? Okay. So, and I hope now people are a little bit more comfortable with writing their user-defined function. So how do I write a user-defined function? I write a function with using my def command. So def tells me that I am creating my own user-defined function. Now what I want to do is I want to introduce the concept of try, except, and finally. Try, except, and finally. Try, except, and finally. So basically, in try, you will give the main logic. Main logic which you want to execute. Okay. What is except? Exceptional conditions कौन सी होती है? Except when the logic fails or gives error. And finally, as the name suggests, will be executed when there is no error or even when error is here. Try, except, and finally. Okay, so Siddharth is saying, please explain the break statement. Okay, Siddharth, I've just seen your message. I'll explain it once I explain this try, except, and finally. Then I'll come back to you and I'll explain the break statement once again. Okay. So concept of try, except, and finally. Just give me a second. Suppose if I create a program, let me say def add two numbers. Okay. Add two numbers. And I give a comma b. Okay. So this program will add the two numbers a comma b, right? Now what I'll say is I'll say try. Print addition of two numbers. Numbers is, and I can just say a plus b. Am I right? But let's say if addition would be performed only when the user has given some numbers. But let's say user has given non-numeric data. Then it should not be able to perform this execution. What I'll say, except. And again, you give a print statement. Print. Enter the numeric input. Or let me say input should be numeric. And do you notice again I am following the indentation? Try के साथ colon आ रहा है, उसका indentation आ रहा है. And then let me say finally. Finally, print execution. Or let me say you have added the values. Tata, bye bye. ठीक है, कुछ भी दे दो यहाँ पे. Whatever you want to print. इसको कुछ ऐसा समझो. Let's say if user enters the wrong PIN number, you are drawing the money from the ATM. If you enter a wrong input, then it should give you the error message. If you give the right input, it should give you the money. ठीक है ना? And at the end, it should say you some message. Whether तुमने wrong किया है right, it should say try again or tata bye bye whatever. Right. Now let me execute this function. अब सब लोग ध्यान से देखेंगे. So 2, 6.
Addition of two numbers is 8. You have added the value starter by. Because finally would be executed whether you give error, whether error is there or error is not there. Right. Now suppose if I run something like this. If I say input should be numeric. This time, do you notice it is printing this part? Exception condition. Exception condition means error aaya hai. So exceptional part would be executed only when error is there. Do you notice? When the logic fails or gives the error. Right? And if error is not there, and do you notice every time this final line is always printed finally, as the name suggests, finally matlab wo har baar print karega whether error is there or not there. Exception would be printed when logic is incorrect. And try is the main logic. If there is no error, the try part would be executed. So please write this comment, create this program, and run it multiple times with and without error. I give you 5 minutes. And then after that, I'll explain you what is the meaning of the break statement. So there are a few people who came late. You missed something. For time, please. 20 minutes. You have taken it more than around 45 minutes. ब्रेक पे दोस्ती छोड़ दो, ठीक है ना? इंडिविजुअली जाओ. डोंट थिंक कि जब सब साथ में आएंगे तब ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है? So there are few people who came just now. Just to explain them. After login, let me know. I'll repeat it. Login किया? Are you able to see the screen? Okay. Those who came just now, again, I'm repeating. I am trying to explain this part, line number 42 and line number 41. So there is a concept of try, except, and finally. So in your try, you will give the main logic which you want to execute. Exception. What is exception? Exception means when you are getting an exception, jab error aa jata hai, something unwanted happens. Finally would be executed even when there is error or there is no error. Error ho ya na ho, it will still be executed. Now, I have created this program. Add two numbers. The try, in try block, I am saying print addition of two numbers is a plus b. In except, I am saying print input should be numeric. In finally, I am saying print should be added. You have added the value starter by whatever. When I run the line number 43, do you notice it says addition of two number is 8? Why? Because value of A is 2 and value of B is 6. At line number 45, क्या ये वाला statement print हुआ है? Input should be numeric. Is the statement printed? Yes or no? I am asking you both. Print नहीं हुआ, right? It is not printed. Why? Because the input which you have given is a proper input. At the next line, when I said 2 and Pune, so Pune is a non-numeric data and you want to perform a mathematical operation. So a mathematical operation cannot be performed on a non-numeric data. So when I run this thing, do you notice it says input should be numeric. So when you have the error, the exception block would be executed. And finally would be executed even if you have error or if you don't have error. And make sure you are following the indentation. जहां पे भी colon आएगा, indentation हमेशा follow होगा. Simple thing, याद रखिए. So I'll put this comment on the chat window. Quickly take it. So basically, try, except, and finally is used for debugging your programs.
हुआ? तो शायद वो कॉन्कैट कर देगा, एक के पीछे एक चिपका देगा। एडिशन नहीं, कॉन्कैटिनेशन, चिपका दिया होगा, एक के पीछे एक कर दिया होगा। देखो अगर कोर्स में सी 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 सी, सब लोग प्लीज यहाँ पे देखो, 2 numbers दिए, right? This time I have given without quotes. Now if you give with quotes, ठीक है, चिपका दिया है concatenated, ठीक है ना? So now this 2 and 6 is no more a number, they are acting as a string, they are acting as a string, ठीक है? But if one is number, another is string, then you cannot perform a mathematical operation. If you want, you can put a check for numeric also, type equal to something, है ना? अगर तुम्हें चाहिए। Take 2 minutes and let me know, and then I will move ahead. फाइनल वाला हमेशा प्रिंट होगा, it will be printed always. Okay, I think now let's move to the next part of the function. Lambda functions, which are also known as your anonymous functions.
lambda functions, which are also known as your anonymous functions. Okay, so before I explain lambda function, what do you mean by anonymous? Unknown. Unknown और जिसका कोई नाम नहीं है, anonymous. Anonymous writer, anonymous author. हिंदी में बोले तो अनामिका टाइप से, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं है. So anonymous functions, lambda functions, these functions are without name also. तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इस फंक्शन का नाम क्या है. If you want, you can put a name of a function. If you want, you can avoid the name of the function. So, okay. Now, so lambda function. So for example, guys, let's do one thing. So did you notice I had created one function over here? ठीक है, एक function यहाँ पे create किया, and then I did something else. But again, if I want to execute this function, I can just copy this thing and I can run it over here. ये function मेरा already created है, right? So I have created function earlier, but I want to use it later on. I can easily do it. No problem with that. Okay. So it is this type of functions are not anonymous. Lambda functions are anonymous functions and are created where you want to use it. जहाँ पे use करना है वहीं पे create करा, वहीं पे use करा. It is nothing like you will use later on or whatever. Okay. Wherever you want to use it. ठीक है. अच्छा. Now, before I introduce, I write the code of lambda function. I hope one thing is clear to everyone that at line number 38 I had created the function. Function को create किया. At line number 39 I have executed the function. And while executing the function, I need to give some input also. अगर मैं input नहीं दूँ तो मुझे error आ जाएगा. So will people agree with 2-3 points that you need to create a function, then you need to call the function, and while calling the function, you need to pass some input. ये तीन चीजें तो करनी पड़ेंगी, उसके बिना तो काम नहीं बनेगा. So even let's say when you are using the print function, it was already created. Then you write the print, give some input, and then you execute it. So whether it is inbuilt function or whether it is your own function, कुछ तो तुम्हें input देना पड़ेगा, right? So the same 3 points have to be followed in lambda function also. You create a function, you call a function. Okay, let me say this bar multiply number equal to, अभी कोई कोडिंग नहीं करो, सिर्फ समझने की कोशिश करो lambda. So previously I had used def, this time I'll use lambda. Now system will know a lambda function is being created. Bracket open करेंगे and bracket close करेंगे. I want to multiply two numbers. Let me say I want to multiply number C and D. Then what I'll do, I'll say this, and let me say 10, 12. So ये lambda में कुछ issue आ रहा है. नहीं comma में कुछ नहीं डालना पड़ेगा. I think ये bracket नहीं जाएगा. ठीक है. Now multiply. Let me do one thing. Let me just let me do one thing. यहाँ पे 10, 12 नहीं, यहाँ पे C into D डाल देते हैं. ठीक है. Multiply number and then I say let's say 10, 5. 50 आ जाता है. ठीक है. 10, 5. Okay. Now what is happening? So keep 3 things in mind. Create a function and then you will call the function and pass the input. इन तीनों चीजों के बजाय काम हो सकता है. You need all these 3 things. Am I right? So now this is the point where I am defining my input. Okay, so if you are defining something and this is the execution part, what the function will do. Function karega kya? And at line number 58, I am calling the function. So again, let me repeat. This is like your
input. This will take as your input. So you will pass some input. For example, over here, define add two numbers a and b. This was the input, जिसको हम argument भी बोलते हैं, argument. Then this is your execution part. What is this function supposed to do? करना क्या चाहता है function? And then at line number 58, you are calling the function. ठीक है? अब please करो. And then we'll put the various variations of lambda. अभी ये simple लग रहा है. अभी इसको map से combine कर देंगे. Map and list के साथ. Map and filter के साथ, sorry. So name of the function over here is multiply number. Yes, I will. Which line you want me to explain? See, keep one thing in mind. There is no answer why lambda. Whatever lambda can do, the normal DEF function can also do. But vice versa is not true. जो DEF कर सकता है जरूरी नहीं कि lambda कर पाए. Lambda can do very small logic. ठीक है ना? But this is the thing given in Python, and many a times you will see people using lambda functions. ठीक है? So whatever DEF can do, lambda can also do. But just to explain this line number 57. So it is a function. Lambda is also a user-defined function. So you create a function, you call a function, and you pass the input. ये तीन चीजें तो करनी पड़ेंगी. Otherwise, you cannot get a proper output. So multiply number is the name of the function. Okay. Then this C comma D is the way you pass the input. And whatever you want to do with that input. This is the logic part. C into D is your logic part. What? First line means which line? Line number 57, 58. कौन सी बात कर रहा हूँ? 57. Yes, at line number 57, I have created a function. Passing the input is your 58. Do you notice the name of the function is multiply underscore number? उस function को call किया. Do you notice the calling of this function is almost similar जैसे हमने ये वाला function call किया था. Prime underscore number was the name of your function. Function call करते time उसमें एक input pass किया था. Line number 57 is creating the function, passing the input, and defining what function will do. इस लाइन को तुम थोड़ी देर के लिए समझ सकते हो. This line number 57 can be taken equivalent as line number 38, जहां पे हमने function. So do you notice at line number 38, I have defined the logic also. Function करेगा क्या? वो prime number check करेगा. ठीक है? So you can say line number 57 is equivalent to line number 38 in simple terms. So, ठीक है? Creating the function and defining what would be the input, and then
ओके, आई नो सबके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा किसकी क्या इतनी जरूरत है, राइट है ना, जरूरत क्या है आ रहा है, ठीक है, अब मुझे पता ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, बट इसकी जरूरत है, अभी पता चलेगा, ठीक है। सो लैम्डा फंक्शंस become very powerful and useful when combined with map and filter. अब तुम्हें इसका पावर समझ में आएगा, when combined with map and filter. Requirement is I want to find the squares of all the numbers mentioned in list num. सपोज करो मुझे इन सारे नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? Suppose you want to find the square of all the numbers mentioned in the list. स्टार स्टार तो करोगे, बट एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा. For I in num, then you will say something something, right? वैसा ही करोगे ना. अब this thing can be easily done using your lambda. अब समझ में आ रहा है? It can be done very powerful using your lambda function. So now what I will combine? I'll combine it with your map function. ठीक है? So I'll say map, then I'll say lambda. Lambda को यहाँ पे copy कर देते हैं. Lambda, and then I'll just say x. कोई भी variable ले लो, and I'll say x star star, and then I'll say comma num. And I'll say list this thing. देखो आ जाता है, आता है. So square of 2 is 4, 4 is 16, 6 is 36, 8 is 64, 10 is 100, 11 is 121. कैसे हुआ? Now again keep the three things in your mind. Create a function. So remember I have taken a very sequential approach. Creating the function पहले ही बताया. So can I say this is your creation of function? This will tell you the input. X into X will tell you what do you want to do. And this num is your list. This num is your list. And I have combined it with your map. So basically this map is used to execute the code multiple times. So it will take, so do you notice अब for loop की जरूरत नहीं है. It will take one entry from the, it will take first entry from the num. It is 2. So it prints this thing. So अब इसको ऐसे देखो. So what are the three things over here? The x acts as your, x will take the input. ठीक है? And then x cross x is the execution part. And input will come from num. Input will come from num. देखो समझ में आ रहा है सबको? Input will come from num. Now before you start coding, at line number 64, compare this line with this line. At line number 57, what was the name of the function? Multiple underscore num. क्या line number 64 पे function का कोई नाम है? नहीं है. There is no name of the function, and that is why it is called anonymous function. कोई नाम नहीं है. And this function you cannot use later on.
जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन द प्राइम नंबर, सो आई कुड जस्ट कॉपी दिस थिंग and I could write it over here, and if I say 9 it will give me the answer. But this logic you cannot use later on because function का कोई नाम ही नहीं है, right? It is anonymous. आप समझ में आ रहा है? So जिसके माइंड में ये आया लैम्डा इग्नोर कर सकते हैं, जो भी काम लैम्डा से करना है डीएफ से कर सकते हैं. अपने थॉट को चेंज करो, लैम्डा इज ऑल्सो नीडेड. ठीक है? When next time I'll combine with my filter function. ठीक है? Go ahead and try. क्या कह रहे हो? लिस्ट में जो नंबर लिखा है क्या समझा नहीं मैं तुम्हारी बात. नहीं 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 सी 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 तुम समझे नहीं. एवरीवन प्लीज, एवरीवन अगेन स्टॉप एंड सी ओवर हियर. आर यू आस्किंग दिस थिंग कि हमने जब से रन किया, डू यू नोटिस आई डोंट गेट एन एरर बट आई डोंट गेट एन आउटपुट आल्सो. इस तुम्हारी क्लास में कई सारे लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, राइट? व्हाट इज दिस आउटपुट? ये क्या है? क्या ये क्या है? एड्रेस है. सो execution has been done and it has been stored at some memory location. तुम्हारे सीपीयू का लोकेशन बता रहा है, ठीक है? But if you combine with this, then it shows you the proper output. तो जैसे ही मेरे को ये चीज आई मैं समझ गया कि एग्जीक्यूशन हो गया बट आउटपुट यूजर को नहीं दिख रहा है. ठीक है? So again, probably it's not needed for you because something like this. So this is the memory address. उस CPU पे memory location पे वो value store हो गई है. But as a user, you are not able to see it. So when I combine it with this, I am able to see the proper output. Okay. डन. एक छोटा सा एक्सरसाइज करो. तुम्हारे कल का क्लास टाइमिंग मैं चेंज करा रहा हूँ. इंस्टेड ऑफ 8:30 लेट्स कम बाय come by 10. 10 बजे का क्लास कर लो. ठीक है? Everyone make a note. Don't come by 8:30. Come by 10. So we'll go from 10 to 2:30. ठीक है? And no need to wait for Utkarsh's confirmation. मैंने बोल दिया उत्तराखंड. ठीक है? अच्छा, do one thing.
तुम लोग को पता है टेम्परेचर दो तरीके से मापा जाता है, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। यस, ओके। सो मुझे फॉर्मूला तो याद नहीं है, फॉर्मूला फॉर C2F, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफ यू वांट टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। आई थिंक बेसिक फॉर्मूला है बट मुझे भी याद नहीं था। F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। नाउ डू वन थिंग, create a lambda function which will convert centigrade to Fahrenheit for below numbers. कौन से numbers? Let's take the same numbers. No, let me give you the numbers. So centigrade के numbers हैं. Let's say centigrade numbers are 0, 100, and let me say -40. Let me say 50, 60, 28 and 212. इन सारे नंबर्स को कन्वर्ट करो यूजिंग योर लैम्डा फंक्शन. नो वन विल यूज DEF, ठीक है. कन्वर्ट देम. यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला एंड आई हैव गिवन यू द दिस थिंग. बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ जहां पे x इक्वल टू x लिखा था ना, वहां पे बस ये वाला फॉर्मूला डाल देना, काम खत्म. लेट मी नो जिस इसका हो जाएगा. सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32. हाँ ये सही है. -40 का 40 आया, राइट. 100 का 212 आया, हाँ राइट, ठीक है. फॉर्मूला सही है.
2 घंटे पीछे चल जाओ। Okay, so इसका प्रोग्राम कैसा लिखना चाहिए guys? So I'll say list map and then I'll say lambda and then pass anything. Let me say you say temperature or C or whatever, जो भी तुम्हें pass करना है, temperature C, and then I'll say this, and instead of C let me say temp, temperature is equal to this, and then I'll pass CENT, temperature star, हाँ वो star ठीक है. So list map temperature this, clear? अब देख रहे हो, सपोज अगर ये हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना था तो थोड़ा ज्यादा लंबा कोड लिखना पड़ता. यू वुड हैव टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक डीईएफ करते, उसके अंदर में एक फॉर लूप लगाते, राइट, है ना. सो स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ योर लैम्डास, एंड इफ वी वांट वी कैन कॉम्प्लिकेट इट अ लॉट. Now let me say lambda with filter function. Lambda with filter function. Okay. Okay. Now before I write the code, guys, what do you mean by filter? Yes, to extract, to clean some necessary condition. So whenever you are using filter, filter would be done based upon some condition. So filter, अगर चाय भी filter कर रहा तो कुछ, you put some condition, right? That liquid will go and solid will not go, right? So filter, it means in a way some condition which will act as a filter. थोड़ी देर के लिए समझ लो, काइंड ऑफ योर इफ एंड एल्स.
You cannot have a nested if and else, but एक if and else तो हम डाल ही सकते हैं with filter. ठीक है. Now let me say same even odd check. So let me say I want to find which all numbers are even, which all numbers are odd. Let me put some numbers. Put some numbers. ठीक है. Now what I'll do is इसी चीज को कॉपी कर लेंगे, यहां पे डाल देंगे lambda. Instead of temperature, put something, put your x, y, whatever. ठीक है. Now and then I can put this even and odd. Okay. So this time I want to check whether the number is even or odd. So how do I check? I divide it by 2. If the remainder is 0, then it is an even, otherwise it's a odd. Okay. So I want to filter all the, let me say, even numbers. You cannot use the print statement that it's an even number and odd number. Okay. So I want to use the same logic. Then what I'll say is, I'll say x percentage 2 equal to 0. Then I will say x, comma, let me say x is not defined. List map एक 2 ब्रैकेट ओपन हुआ है, so 2 क्लोज भी होने चाहिए. लिस्ट मैप नहीं, यहाँ पे फिल्टर आएगा पहली बात तो. Name x is not defined, so this is the input. It will go input जाएगा, input जाने के बाद greater than 0, then it will say okay. So 2 4 and 60. ठीक है. Now so basically what is happening, do you notice थोड़ा सा समझना मुश्किल है because I am not giving any if and else, but do you notice I am saying equal to 2. So remember, after your colon, this is the execution part. The execution part होता था. Over here in the previous one I was doing calculation. Over here I am checking a condition. Remember, I am saying equal to something. So equal to means you are checking a condition. ठीक है ना? And filter मतलब ही you check a condition. So basically this condition would be checked for each and every element which is there in your even and odd list. And if the condition is satisfied, it will print the number. Otherwise, it will not print the number. अब देख रहे हो? यही सेम चीज अगर for loop में करना होता तो it would have been little difficult. ठीक है. Odd के लिए कर दो not equal to 0. So it will give you एक बार में एक ही चीज देगा, लेकिन वो, और let me say equal to this thing. 0, then you are saying नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम करना है तो थोड़ा मुश्किल होगा. Odd के लिए you give not equal to 0. So this exclamation mark is for not equal to. 2 कंडीशन देना होगा, दे सकते हैं क्या? चेक करना पड़ेगा. आई थिंक मे बी और मे नॉट बी. आई विल चेक एंड लेट यू नो. थोड़ा मुश्किल है.
सबने किया? अच्छा, now let's move toward the last one thing for today. अच्छा, everyone just have a close observation, and then I'll ask you to write a small code. Suppose karo, let me say I have one sentence or string, whatever you can say. Okay, and let me say today is Friday. People don't want to study and want to go home. Okay, let me say. Okay, now this is a sentence, or you can take any variable A, B, C, D, right? So when I say type and when I say something like this, so it's a string. It's a string. If you want, you can find the len also. So SENT, this is of 64 length. And mark my word, it includes the spaces also. It includes the spaces also. Yeah. Now, if I say send dot split split, तो वो क्या करेगा? Split कर देगा. Split कैसे करेगा? Based upon the spaces. Based upon the spaces वो split कर देगा. ठीक है ना? So default is spaces. It will split based upon the spaces. Now, if you want to split based upon something else, you can split. So let's say I want to split based upon the A. जहाँ जहाँ A आ रहा है वहाँ से split कर दो. देखते हो? A के basis पे split हो गया. Okay, send split A. ठीक है. Now, so today TOD on the left side of A, and then this part is printed as it is. Do you notice? This part is printed as it is, and then till this point कहाँ तक जा रहा है? Till W तक जा रहा है. अच्छा, बीच में कहीं A आ गया क्या? हाँ, अच्छा, बीच में यहाँ पे want के पास आ गया. So this part is printed. ठीक है ना? Because you have done the split based upon a particular character. So if you don't give anything, default is space. सब करना समझ आया? Take a minute and run this line. Split.
कॉमा से स्प्लिट करना है, चलो कॉमा देके देख लेते हैं भाई होता है कि नहीं होता है। हो तो रहा है। तो रिमेंबर ए भी तो कोर्स में दिया था। Then can I say that people are clear with the split statement? Yes, no, maybe. Yes, तो मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। क्या तुमने बोला हूँ? है base sentence, let me say इंडिया छोड़ो, कोई अच्छा सेंटेंस सोच रहा हूँ। ओके, लेट मी से rainy season has started, okay? And I want to eat क्या eat करना चाह रहा हूँ, let's say समोसा, पकौड़े। Okay, just for the more थोड़ा सा fun लाने के लिए। Now this is the base sentence, ठीक है? Whatever base sentence you want to take, but I have taken just one example. Write a function, and this time I am saying write your DEF function. Where user will pass a string. Where user will pass a string and compare each word of that string with base sentence and print all the words which are not part of the base sentence. सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया so let me take an example. Let me say example, user entered something like this. Summer season is here and I will eat. I'll eat what? I'll eat mangoes. Okay, so I hope she likes mangoes a lot. Okay, suppose करो ये हमारा input है. Then what all things should be printed? Then summer should be printed. ठीक है? Summer season is here. और मैंने हर लिख दिया. It is here. So here is should also be printed. Remember, is not part of the above sentence. Is should be printed. Here should be printed, and I will not be printed, but will would be printed. Eat would not be printed, and then mangoes would be printed. जो word base sentence में नहीं है वो सारे word को print करा दो. Basically, I am trying to compare the string and find the mismatch. ठीक है, जब तुम data analytics करोगे तो ऐसी चीजें की requirement आएगी. You want to find which all words are not part of the base sentence. First of all, tell me, is the problem statement clear? मैं बोल के आ रहा हूं करने के लिए. ठीक है, अब करो. और इस बार मैं किसी से टाइम पूछूंगा नहीं, मैं खुद टाइम दूंगा. Time given is 5 minutes. You already know how to split it and do it.
ओके करो भाई। हम्म हम्म अच्छा आई नो पीपल विल स्ट्रगल, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। ओनली थिंग इज I want to introduce few more things, and that is why first of all I have given a problem statement. ठीक है, everyone please stop your coding and just have a look over here. ठीक है, सब लोग please अपनी coding stop करो. Let me say I create a list. I create a list and I say something like this. Or if you don't want to create a list, whatever. Or if you want, you can create a list also. So L2 dot split. ठीक है. So when I say L2 dot split, do you notice it is creating a list? एक list create होती दिख रही है. And why? Because you are having the square bracket. Let's do one thing. Let's run a type function on this. Let's run a type function on this. Do you notice it's a list? एक list create होती हुई दिखी. So basically, I'm saying L2 is a string, and then if you want, you can store it over here. And if you check, you can check this thing. ठीक है. Let me say if mango is in L3, print it's found. Mango no. वो इसके लिए दे रहा है if mango print it's found. Mango is in L3. If mango in L3 print, ये condition execute नहीं. और let me say okay, so mangoes है ना, so I think ES अगर हम लगा दें तो ठीक है. So when I say if mangoes in L3, then it's found. ठीक है ना. Suppose if I say, let me say something, and then I say not in इसको भी found क्यों बोला? हाँ अच्छा हाँ. So देख it's, let me say it's not found. ठीक है ना. It's not found. In and not in can be used to check whether the variable exists or not. ठीक है ना. अब इसका use करो. Again let me repeat. Suppose if I say in, and if I give season over here, दो बार in आ गया, then it says it's found. और let me say यहाँ पे ना ये बड़ा confuse कर रहा है. और let me say if condition satisfied. If condition satisfied. ठीक है ना. So season word is there, and that is why it's saying if condition is satisfied. But if I say seasons, then it doesn't print because if condition is not satisfied. So, and if I say not in, so this seasons is not there in this L3 because season तो है लेकिन seasons नहीं है. Then again it says if condition satisfied. So make a note, in and not in can be used to check whether the element exists or does not exist. And I think it's very simple. Not in का मतलब नहीं है और in का मतलब है, right? The way they are used in English language. Up use this logic in the above problem statement which I have mentioned.
किस किसका हो गया? Okay, चलो let's do it. Let me say DEF. प्रोग्राम का नाम क्या लग दें? Comparing the string. Compare the string. And let me say str1. Then see, obviously I am asking you the base sentence will remain the same. ठीक है, तो तुम if you want you can write this outside the loop or outside the function or whatever, right? Now let me say, let me write, I'll take a little longer approach and then if you want you can shorten it. L1 equal to base sentence dot split. Can I say this part is clear to everyone? It will split and store it in the list. Remember line number 98 and 99, the same thing which I have done. Now what I'll do is, let me say L2 is equal to str1 dot split. Okay, so whatever the person enters, it would get splitted. Okay, then I'll say for I in L2, for I in L2. Okay, if I in L1, if I in L1 print, or I'll say मैंने condition क्या लिखी थी? If it is not, right? So I'll say not in L1 print this word is not there in base the string, and then I'll print comma I. Function created. Copy this function and pass this input. So let me say this is the input. ठीक है, और पूरा का उठा लेते हैं, पूरा ऐसे उठा लेते हैं and pass it over here. The word is not this. Summer is here, will mangoes, right? नहीं है, right? These are the words which are not there. यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं ताकि और अच्छा आउटपुट आए. Summer is here, will mangoes. These words are not there. Am I right? ये words नहीं है. अब देखो हुआ क्या है. So this is the base sentence. First of all, you have splitted it. And then I'm saying for I in L2. What is L2? So L2 is nothing but this sentence which the user is sending. It will get splitted. तुम जो भी input भेजोगे, that would be mapped, stored in your str1. And then you are splitting str1. So after splitting, each word would have been splitted. And then I'm putting my for loop for I in L2. And if I not in L1. Okay, so do you notice season word is common in
base sentence also and the sentence which the user has entered. So it is not getting printed. Okay. But for example, the word eat, it is common in both of them. But mangoes is not common in both of them. So it is getting extracted. ठीक है, प्लीज रन करिए. बड़ा मुश्किल था नहीं ना, सारी चीजें हम लोग ने करी हुई थी. स्प्लिट भी बताया था, फॉर भी बताया है, इफ भी बताया है, नॉट भी बताया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना भी बताया. ओनली थिंग इज वी हैव टू जस्ट ब्रिंग देम टुगेदर. Everyone try doing it. Done. Okay, guys. So we'll end the session over here. Thank you everyone for joining, and we meet tomorrow. And for tomorrow again, I'm repeating. कल का class 10 बजे का रखा है, ठीक है? So lunch लेके आना. Tomorrow session will just continue for a longer time. ठीक है? Probably it may start by 10:15 and it will go by जब तक मेरा मन करेगा by 3:30 or something like that. ठीक है? At least 4 hours से ज्यादा होंगे. And तुम चारों प्लीज पढ़ के आओ, कल तुम्हारा नंबर आने वाला है, ठीक है? And others also. ठीक है? So thank you for joining. I'll end the session now.